સાણંદ તાલુકાના વિરોજનગર ગામે ઈદગાહમાં ઈદની નમાઝ અદા કરવામાં આવી હતી। સાણંદ તાલુકાના વિરોજનગર ગામે ઈદગાહમાં ઈદની નમાઝ લઈને અદા કરવામાં આવી હતી, જેમાં તમામ મુસ્લિમ બિરાદરો મોટી સંખ્યામાં ઈદની નમાઝ અદા કરી હતી। ચારોડી, કલાણા, દોદર, વિરોજનગર, સાણંદ તાલુકાના બીજા અન્ય ગામોમાં પણ ઈદની નમાઝ અદા કરી હતી। તમામ મુસ્લિમ ભાઈઓનો નમાઝમાં હાજર રહ્યા હતા। સાણંદ જીઆઈડીસી પોલીસે હાજર આપી હતી। તમામ મુસ્લિમ ભાઈઓને ઈદના અભિનંદન આપ્યા હતા। જે કે સિંહ ગુજરાત સાથે અફઝલ ખાન પઠાણ સાથે બહલોલ મલિક, સાણંદ। आज साणंद तालुकाना विरोचननगर गामे ईदगाहना अंदर ईदगाहनी नमाज पढ़ावामां आवी। अल्हम्दुलिल्लाह पूर सुकून साथे नमाज थई। अल्हम्दुलिल्लाह नमाजना पछी दुआ भी थई अने अमनो अमान माटे दुआओ भी करवामां आवी। मुल्कना हितमां भी अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करवामां आवी कि मुल्कना अंदर अमनो अमान अल्लाह पाक कायम करे अने बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पूर अमननाथी हर एक काम करवामां आवे। आज तारीख 28 रोज साणंद तालुकाना विरोचननगर गामनी ईदगाहना अंदर ईद उल अज़हा निमित्ते जे दिवस अल्लाह तरफथी पोताना दोस्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम माटे एक इम्तिहाननो दिवस हतो। जे इम्तिहानना अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब थई गया अने ए ज अदा अल्लाहने एटली पसंद आवी कि आ दिवसने कयामत सुधी मुसलमानों माटे यादगार बनावी दीधो। अने आ इब्राहिम अलैहिस्सलामनी सुन्नतने अल्लाह तालाए एटली आ अमलने एटलो पसंद कर्यो कि कयामत सुधीना मुसलमानों माटे सुन्नत करार दई दीधो अने मुसलमानों आ अमलने कयामत सुधी करता रहेशे इंशाअल्लाह। आज विरोचननगर गामनी ईदगाहना अंदर बहु मोटी संख्यामां मुसलमानोए जमा थईने ईदनी नमाज अदा करी अने ईदनी नमाजना बाद अमारा शाही मस्जिदना इमाम साहेबे दुआ पण कराई। ए दुआना अंदर देश माटे, देशना लोको माटे, देशनी तरक्की माटे अने देशनी समृद्धि माटे, देशना अंदर अमनो अमान माटे ईश्वरथी अल्लाहथी दुआ करी अने ते पछी मुसलमानोए आपसी भेदभाव भूलीने एकबीजाए हाथ मिलावीने गळे लागीने आ खुशीनो इजहार कर्यो। देशवासीओने शुं संदेशो आपवा मांगो छो? देशवासीओने आ मंचथी आपनी चेनलना माध्यमथी एक मैसेज आपवा मांगू छूँ कि देशना अंदर अमनो अमान कायम राखे, भाईचारो कायम राखे अने जे सरकारी गाइडलाइन है एना मुताबिक આપણે આપણી ઈદનો તહેવાર મનાવીએ। કેમ કે સરકારી ગાઈડલાઇનના મુતાબિક જે પણ આપણને જે જાનવરોની કુરબાની કરવાનું પરમિશન છે એની જ કુરબાની કરે અને જે અમીરુલ હિન્દ આખા હિન્દુસ્તાનના અમીર અને જમિયત ઉલમાએ હિન્દના અધ્યક્ષ મૌલાના અરશદ મદની સાહેબનો જે પેગામ છે, શરૂઆત કરી છે એ શરૂઆત ઉપર અમલ કરે।